तो लास्ट पार्ट में हमने प्रिसीजन रिकॉल प्लॉट तक देखा था। इस पार्ट में हम फीचर सिलेक्शन देखेंगे। बेसिकली हो गई है कि हम फीचर सिलेक्शन में हर एक मॉडल को दोबारा से हम यूज़ करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि कौन सा मॉडल जो है कौन से फीचर को इग्नोर करता है, और उसके बाद एंड पे हम वन बाय वन सारे मॉडल्स को देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सा मॉडल कौन सी कॉलम को इग्नोर कर रहा है और कौन से कॉलम को यूज़ कर रहा है, और बाकी कितने नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं उसने एक्सेप्ट किए हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को रिजेक्ट किया। तो एंड पे फिर उसको हम सारे जो क्लासीफायर्स होंगे हम कंपेयर करेंगे कि फीचर्स कौन से ऐसे थे जो कि एक्सेप्ट हुए हैं मॉडल्स या क्लासीफायर्स ने किए हैं, और कितने फीचर्स थे जो कि एक्सेप्ट हुए हैं और रिजेक्ट हुए हैं। तो अभी उसके लिए मैं उसके लिए वन selector तो अभी सबसे पहले हम कोरिलेशन देख लेते हैं जो टारगेट वेरिएबल y है उसके मुताबिक। तो कैलकुलेट द कोरिलेशन विद y फॉर ईच फीचर। इसके बाद फॉर i in जो x डॉट कॉलम्स में डॉट जो लिस्ट, उसके बाद numpy np डॉट f डॉट पेंट। अब हम रिप्लेस कर लेते हैं नॉट ए नल, जो कि अगर कोई नल वैल्यू है तो उसकी जगह हमारे पास जीरो, नल की वैल्यू की जगह जीरो रिप्लेस कर ले तो जीरो वैल्यू जो कि वो स्टोर हो जाएगी। तो रिप्लेसिंग या रिप्लेस एन नॉट ए नंबर विद नाउ और list is equal to 0 if n I, अगर जीरो होगा तो नल होगा या नॉट अ नंबर होगा तो जीरो स्टोर हो जाएगा। एल्स I फॉर I इन कॉर लिस्ट, वरना I वैल्यू जो है वो वही सेव होगी। अब फीचर नेम्स देख लेते हैं। फीचर नेम्स या फीचर नेम जो है वो, और फीचर इक्वल टू x नॉट np डॉट सॉर्ट ओके। सो यहाँ पर मैं think I'm doing some mistake. यहाँ पर मैं एक और फीचर चुनता हूँ, माइनस नम फीचर।
dot columns dot to list. अब हम फीचर सिलेक्शन 0 होगा तो 0 for not select और 1 for select. Is equal to इसमें true if I in feature else false for I in features name. Okay, now सही रिटर्न कर ले. और सपोर्ट में और कौन फीचर इज इक्वल टू और selector x y and then feature. So लास्ट में मैं प्रिंट कर लेता हूँ कि प्रिंट स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ core feature. So num feet और ठीक selected feature. सही. अब मैं अगर चेक करूं float is not callable, मेरे पास ये एरर कहाँ पर है? So for I to list x I ये भी सही है, not core ये भी सही है. 0 if np is as I for I in core list ये भी सही है. तो इशू कहाँ है? फीचर नेम np.abs core list minus num feeds और columns dot to list. उसके बाद true if I in core feature as false for I in feature name. Return core support core feature और core support core feature में core selector x y num feeds. print में string and core feature selected. I didn't find any यहाँ मेरे पास एक इशू आ रहा है जो कि मैं देखता हूँ अगले पार्ट में. चेक करते हैं कि हमारा क्या एरर आ रहा था.